Hello everyone, welcome to Ahead IAS once. In the series of the World Affairs, the initiative by the Ahead IAS, we are going to discuss a topic that is currently very important as per our geopolitics, as per the international relations, and especially the global perspective. If you think about the Iran, which lies Asia's in the heart, so a country है ईरान which is rich in history, rich in oil, but today rich in anger. So आज हम समझेंगे कि ईरान में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, why such things are happening, and geopolitics से geography तक सारी चीजें we'll try to understand. First of all, understanding such situations, we need to understand the location of country. Iran is strategically very important country, which lies in the West Asia. North में Caspian Sea है and south में Persian Gulf and the Strait of Hormuz, which is 20% of oil trade passes through that. That makes Iran more attractive part for all other countries which are actually dependent on the oil diplomacy, and that becomes a bone of contention for many countries. That in this direction we'll try to understand why such situation has arisen and exactly the location of the Irans has changed the perspective of our understanding. So please be in the video. We'll understand the whole idea behind it, how things are happening, and what is the actual cost of living protest that is going on in the Iran. What has happened in the history? We'll try to understand in 2022 what cases that erupted and now resulting in the chaos. Okay, so first start the history. What has happened in the past? Once you understood the location of a country, you know many things. Once the strategic location of it and strategic importance. Second, very important aspect is that the importance of particular country with respect to the other countries. That is demand and the supply. It has the same importance for the Iran also. If we go back in the history of the Iran, you will find Iran की history ancient Persia से शुरू होती है, लेकिन मॉडर्न ईरान का जो टर्निंग पॉइंट आया वो 1979 में आया. That is Islamic Revolution. Just after the revolution, the monarchy completely vanished. So monarchy खत्म हुई, Islamic Republic बना और supreme leader became the most powerful authority in the country. यहाँ डेमोक्रेसी है लेकिन कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है. दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि why there is a controlled democracy, and that become one of the cause for this the situation that is presently. सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब हम सोचते हैं कि ये प्रोटेस्ट शुरू ही क्यों. What triggered the protest and what is the immediate cause for that? Recent protest तब एक्सप्लोड हुआ जब एक यंग वुमेन की डेथ मोरल पुलिस कस्टडी के बाद. गवर्नमेंट के लिए ये रूल इन्फोर्समेंट था, बट पब्लिक के लिए लिमिट क्रॉस करने का मोमेंट बन गया. हिजाब लॉज और मोरल पॉलिसी पहले से ही फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर चुके थे, सो ये रीसेंट बस ट्रिगर था. सो दिस हैज बिकम this has worked as a fuel to fire in this protest. And the cost of the living protest, the economic reality of the Iran की इकोनॉमी पर यूएस के सैंक्शन का हैवी इम्पैक्ट पड़ा. That resulted into the high inflation, rising food prices, unemployment, currency collapse. और लोग बोल रहे हैं कि आइडियोलॉजी से भी पेट नहीं भर. The thing is that it is called as the cost of the living protest because the basic needs for the survival in the country is not being fulfilled by the government itself. And the cost of living protest is not the only aspect. There are many more. The role of regional politics itself has a very much importance in this statistics. ईरान सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का प्लेयर नहीं है, ये रीजनल पावर भी है. ईरान का इन्फ्लुएंस इराक में भी है, सीरिया में भी है, लेबनान दैट इज हेजबोल्ला एंड यमन में भी है. यमन को अगर देखो तो रीसेंट क्राइसिस यमन में है. नॉर्थ में सना के साइड और एसटीसी which has become a bone of contention. And Iran, it is said that Iran is indirectly supporting in the Yemen. And Saudi Arabia, Israel और गल्फ ऑफ कंट्रीज के साथ राइवलरी ईरान को परमानेंट प्रेशर जोन में हमेशा के लिए रख देती है. सो रीजनल इम्बैलेंसेस का कॉस्ट ऑफ एंड कॉमन सिटीजंस पे करते हैं, एंड दैट इज व्हाट्स हैपनिंग इन द ईरान. Some people also arguments that the role of America, that US-Iran tensions intensified such situations. And what are the distances? US और ईरान का रिलेशन डिकेड से हॉस्टाइल हमेशा से रहा. इफ यू सी इन द हिस्ट्री, स्पेशली न्यूक्लियर प्रोग्राम के बाद अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी एंड दैट ऑयल एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर दी, फाइनेंशियल आइसोलेशन की
और यूएस के लिए प्रेशर टूल है, लेकिन ईरान सिटीजन्स के लिए ये डेली स्ट्रगल बन जाता है। एंड दैट द ग्लोबल पॉलिटिक्स, द रीजनल imbalances and political instability that has caused several deaths in the recent days. Let's connect the India with the Iran. इसके डिफरेंट डायमेंशंस को समझते हैं एंड की इंपॉर्टेंस एरिया। इंडिया के लिए ईरान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। की एरियाज इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑयल इंपोर्ट्स, चाबार पार्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गेटवे टू द अफगानिस्तान एंड द सेंट्रल ईस्ट, एंड दैट actually provide the regional connectivity. And India का अगर perspective you see it, India always has a balanced diplomacy जो follow करता है। Engagement without interference. इंडिया का प्रोटेस्ट पार कॉशंस रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक जो इंटरेस्ट है दैट इन्वॉल्व। ओके, सो इफ यू अंडरस्टैंडिंग ऑल द डिफरेंट डायमेंशंस, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द ईरान, द वे है आगे ईरान के लिए तीन रिस्पॉन्सिबल पाथ्स हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट, द प्रोटेस्ट को सप्रेस करना, whatever protest is that is going on that need to be suppressed. Second, the gradual reform introduced in terms of the administrative part, in terms of the uh, women related issues that need to be tackled. And third, the long term instability का risk, जो real solution तभी आएगा जब economic relief मिलेगा, social freedom बढ़ेगा और dialogue start। So considering the various facts and understanding the current global situation, Iran must have the changes which is demand of the time, and definitely it will give a stable government and a stable country too. That is the whole idea behind it. So thank you so much being a part of the Ahead IS, and you have watched this video. I hope they have provided a good analysis that actually required to develop a good perspective behind any kind of issues at national level or global level.